Hello students, myself Karan Sonagra. Welcome to the chapter number 12, Fun with Magnets. Let us start our today's session with learning objectives of this chapter. So at the end of this chapter, you students should be able to know what magnetic substances are, the properties of magnetic substances, and the meaning of magnetic field. And students also be able to identify the different types of magnets, the poles of a magnet and their usefulness, and the uses and care of magnets. So let us start our today's session. Key magnets we are using in many ways almost every day. Say for an example, कि जो pencil box होता है, right, that clicks shut because the lid has a magnet. Also in the restaurant, जो shop होता है, it has a metal cap which itself to a magnetic holder above the sink, so the soap stays dry. Second, the magnetic buttons. तो ये मैग्नेटिक बटन्स होते हैं, वो हम लोग रिमाइंडर नोट्स जो होती है उस नोट्स को स्टिक करवाने के लिए कपबोर्ड पे लगाते हैं. सो दिस मैग्नेटिक बटन, मैग्नेटिक होल्डर एंड दिस मैग्नेटिक shut, you can say. Then magnets are being used in many objects every day. So here in the pictures you have to predict where the magnets have been used. So first of all, you can say on the fridge door, then in this पर्स, यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक क्लिप जैसा लग रहा है वो, देन ऑन द डोर, कपबोर्ड के जो डोर है वहाँ पर, देन ये स्टैंड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन होल्डर है ये. सो these are the things where magnets have been used. Now let's move on to our next topic, which is the discovery of magnets. So there are many stories behind the discovery of magnets, but most of the common is of a shepherd named Magnus. तो एक शेफर्ड था कि जो अपनी बकरियां चरा रहा था इन द एरिया ऑफ ग्रीस कॉल्ड मैग्नेसिया. कब? 4000 साल पहले. सो ही फाउंड दैट द नेल्स ऑफ हिज शूज एंड द मेटल स्टिप ऑफ हिज लॉन्ग स्टिक बिकम फॉर्मली स्टक टू द लार्ज. मतलब कि जो उसकी नेल्स थी उसके शूज की और जो उसकी लॉन्ग स्टिक होती है उसकी जो मेटल टिप थी वो स्टिक हो रही थी ओवर अ लार्ज एंड ब्लैक रॉक on which he was standing. So this rock was named magnetite after the name of either Magnesia or Magnus himself. But people soon realized that magnetite not only attracted the objects made up of iron, but it also pointed in the north-south direction of Earth when it is suspended in the air or made into the shape of needle and floated on the water. So this was the creation of compass. Therefore the magnetite was also known as lodestone or leading stone. तो लीडिंग स्टोन या तो लोडस्टोन कब उसको मिला नाम? जब कंपास का क्रिएशन हुआ, राइट. सो
मैग्नेटाइट जो है वो नाम मैग्नीशिया या तो मैग्नेस के नाम से पड़ा था. सेकेंड, that magnetite does not only attract the objects made of iron, but it also pointed towards the north-south direction of the earth when you are suspending it in the air, and when you made it into the shape of needle and floated on the water. So this is the way they made the first compass. Now let's see what are magnets. So the magnet is a piece of iron or another metals that attracts the other iron containing objects. So that is called, or that piece of iron or any other metal is called magnet. तो एक जो मेटल आयरन की बनी हो या तो दूसरी मेटल की बनी हो विच अट्रैक्ट्स दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, तो दैट पीस ऑफ आयरन और अनदर मेटल is called magnet. So if you try to pick up different types of magnets with the magnet, so you will see that some objects are attracted to it while others are not. So जो objects आयरन, निकल एंड कोबाल्ट जैसे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते, so those kind of objects are called मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है वो किसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. सो दिस metals are attracted to the magnets. So the iron, nickel, cobalt are called magnetic substance, while the steel is slightly magnetic substance. Why? Because it depends on the containing of iron. कि कितना आयरन वो कंटेन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि स्टील है वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द मैग्नेट और नॉट. देन द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वुड, गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट्स. सो अगर ये टूवर्ड्स द मैग्नेट्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहे जाते हैं. सो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस are the objects which does not attracted towards the magnet. Whether a material is magnetic or not, it depends on its atoms, the particles that make up all matter. तो बेसिकली जब भी आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे और तब आपको पता चलेगा कि जो ये मैग्नेटिक मटेरियल है वो उसकी मैग्नेट आप ये बोल सकते हो कि मैग्नेटिज्म जो उसका है वो डिपेंड किस पर करता है? उसके एटम्स. सो हियर वन एक्टिविटी इज गिवन टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सो व्हाट यू नीड? अ मैग्नेट, वुडन पेंसिल, सोडा बोतल कैप, प्लास्टिक बोतल कैप, पेपर क्लिप of a metal, rubber band and leather press. So what you have to do, bring each of this item mentioned above and close to the magnet. मतलब सारी आइटम लो और एक एक करके उसको मैग्नेट के पास रखो. दैट you will find that some items are attracted to the magnet and some are not. तो जो आइटम मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होती है वो यहाँ पर लिखो और जो नहीं होती वो यहाँ पर लिखो. So from that you would find that objects made of magnetic substances are attracted to the magnet and the objects made of non-magnetic substances are not attracted to the magnet. So you would find the magnetic substances and non-magnetic substances. Now let's move on to our next topic, which is shapes of magnets. So magnets are of different shapes like bar magnet, horseshoe magnet, circular magnet and ring magnet.
So let's talk about bar magnet first. So bar magnets are the weakest of all magnet shape. ये सारे शेप के मैग्नेट में से सबसे वीकेस्ट है. And we will also understand why they are weak when we study the structure of magnet and its pole. जब भी हम उसके मैग्नेट के स्ट्रक्चर और पोल के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि why it is weakest. Bar magnets are also used in household cabinet door closer and for hanging things on the refrigerator. जो ये हाउस होल्ड के कैबिनेट डोर होते वहाँ पर क्लोजर के लिए वो यूज़ होता है और हैंगिंग द अदर थिंग्स ऑन द रेफ्रिजरेटर. सो दिस आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ बार मैग्नेट्स. देन होर्स शू मैग्नेट्स. सो दिस मैग्नेट्स बेंट इन द मिडल. The industrial sized large horseshoe magnet is used to pick up the metal at construction site. तो ये जो large horseshoe magnet होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है? To pick up the metal at construction site. So this is the application of horseshoe magnets. Then circular magnets. So there are used in car junkyard and ship dockyards. The application of circular magnet is in car junkyards and ship dockyards. So these magnets are shaped into a thick circular disc and the poles are on their flat surface. मतलब कि जो ये मैग्नेट होते हैं वो थिक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में होते हैं और उसके जो पोल्स होते हैं वो फ्लैट सरफेस पे होते हैं. इट मीन्स कि अगर मैं ये डिस्क कंसिडर करता हूँ राइट, तो इसका जो अपर पार्ट है वो एक पोल होगा और लोअर पार्ट है वो दूसरा पोल होगा. और इजीएस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो सिक्के की दोनों तरफ जो होती है राइट, हेड एंड टेल, तो उसी तरह से इसके पोल्स भी नॉर्थ एंड साउथ सिक्के की दोनों तरफ जैसे ही होंगे. दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड देयरफॉर अप्लाई अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल. इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल एक्सर्ट कर सकता है. देन फोर्थ मैग्नेट इज रिंग मैग्नेट विच आर यूज्ड फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो फॉर मेडिकल पर्पज. सो रिंग मैग्नेट इज यूज्ड फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट एंड मेडिकल पर्पज. So these are the different shapes of magnets and their applications. Here I am showing you these shapes of magnet. Here you can see this is the bar magnet और उसके जो पोल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि एक एंड नॉर्थ और दूसरा एंड साउथ. दिस इज horseshoe magnet. उसका एक एंड होता है वो नॉर्थ और दूसरा साउथ. एंड दिस इज रिंग मैग्नेट. तो उसमें जो आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ है और नीचे जो होगा पोर्शन वो साउथ का होगा. सो दिस आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स. दैट्स इट इन टुडेज वीडियो. Thank you and have a nice day.